Good evening, everyone, and we are live. Today is the 23rd episode of Wednesdays for Waste Warriors, and I know that our guest is right there waiting to join the session. It's raining in Pune, and so with rains, we get complementary connectivity issues despite having a fiber or whatever internet. So here we are. I'm Anuja, and I'm the founder of this group called My Waste, My Responsibility, as well as IT Skill School Foundation. And we started the series Wednesdays for Waste Warriors this year to highlight the work done by various waste management innovators and experts in various cities and parts of the country, because this is a pressing problem and we all should know how many people are consciously working on solving this. And just to highlight and share their stories, feature them, we started the series and we've got really good response, and that's how this is the 23rd week and our 23rd episode. And Sandy is here. Sandy, could you please send me a request to join, and then we can start our conversation. I can see that he's there. So I hope you all are doing good and you have rains in your cities, and I hope because of the concretization, waterlogging in your area, because that's already happening everywhere. Okay. Hi. I can see that you've joined and I can hear you. What about you? Yeah, I'm doing good too. It's also Great. raining here in Welcome. Gurgaon, North India as well. Exactly. Same here. It's raining. And suddenly in the evening, I think the rains remember, oh, it's monsoon and I didn't rain all day, so let me just rain. Yeah, So, it just goes full swing. So, you know, after the flyer was made and sent, I realized something, that I just said Sandy there instead of yeah, writing her official name, because and that made me feel that even though we've never met before, we've this is our first, I guess, online, virtual, in yeah. person. This is our first online session. Oh, I think there is something with the internet. But that's what I want to tell everyone. This is our first virtual session, and we've spoken many times. And it just feels that you're so connected, um, that I just said Sandy. And then I realized, oh, his first name is Sandeep. So this is what I guess virtual collaboration does to you, that even though you don't know for a long time, you feel that you've always been connected and you've always been aligned towards this shared purpose. And it makes it so easy to work towards the sustainable goals that we have. I hope Sandy can join soon. Until then, let me tell you about what we plan to do. My Waste, My Responsibility is a group where we have waste management experts, individuals, groups from many cities, and they are all trying to do something which is creative, innovative, and we want to bring out those stories. Audiovisual stories are the best way to uh, help people interact, participate, learn, and take back a few points that you would want to replicate in your city or scale up
if you already have something like that going on. And most of us share the same problems when it comes to waste management: littering, lack of segregation, mixed waste burning, garbage. Yes, are you able to hear? Yeah, Okay, good. So, welcome, Sandy. And let's start. You wear so many hats, you do so many things. And it's related to climate action, it's related to sustainability, it's related to education. So, why don't you introduce yourself and tell us how is it all connected? आपको आवाज आ रही है? yeah, yeah, you are audible, Yes. ma'am. आप आप अपने बारे में बताइए. How did you start and how did you get into so many things at such a young age? Yeah, yeah, for sure, sure. And first of all, thank you so much for inviting me for the session. And Oh my God. The internet is playing. I think is not with us because of some issues with network. So आप बोलते जाइए. हम yeah, सुनने yeah, के लिए सब definitely. तैयार. So first of all, thank you so much for inviting me here in the session. And first thing, I'm following you since long time because you're pretty much active in the on this topic of sustainability and climate change and these all things. So if I talk about like how I started the things, because I coming from a farmer class background family from north of Haryana. So since I childhood, I faced lot of challenges in terms of deforestation, in terms of women health, in terms of that typical thinking, Yeah, people's thinking, because Haryana was famous in 90s days because of the Khap Panchayat and women rights. So yeah, those all things that I, experienced early in my childhood, in my family, in my village. So yeah. those all things just motivated me to do something for the society. So because That's of that only, I considered like climate change it is not a topic only just for the metro cities. That is a topic for the rural India as well. Because deforestation is continue to happening. There is lot of waste production in terms of plastic and polythene. If I talk about in 90s days, then people were less literate. That time people were not using that much plastic and polythene. But here in this era, we are more educated, but we are more dependent on plastic and polythene. true. So these things, just you can say, these things motivated me a lot and diverted my mind to be into the social work for the full time. That's good. And I would say these things disturb us, and by getting disturbed, we are pushing ourselves. It's like a self motivation. Nobody is, nobody wants. In fact, I've heard many students, um, complain that when they talk about sustainability or working in waste management, their parents are like, "What? Why do you want to waste your degree Yeah, and waste your time doing this?" So yeah, not everyone wants their children to do that, and you have completed education recently and you are doing this. So how does that go? yeah, yeah. If I talk about the same thing, being in Indian society, and if you belong to a middle class and from farmer class background family, then career and earnings, Yeah, more more valuable for you. But being considering those things, like I taken a huge risk in my life, and I decided to be into social work because my background was not social work.
I completed my degree in engineering, and post that I joined a corporate as well. Before After that I switched my job, and then I to be here full time into the social work only. Mm-hmm. So majorly the passion thing, because my passion was social work since childhood. But Mm-hmm. these things turn to be, into the full times because of the social issues that I faced in village, than post that I same issues I faced in the cities as well, specifically in metro cities, in terms of air quality, air pollution, Yeah. and in terms of waste. So it's a big challenge for every Indian metro cities. And you already started a good initiative, my waste and my responsibility. If every citizen will think like that, like their waste is their own responsibility, definitely then this earth will be a better place to live. As We just so, want. thank you That so is much. a small dream, a small desire that it happens. कि सब लोग अगर ऐसे सोचने लग जाएं तो फिर हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे ना. जब हम कचरा कर रहे हैं Yes, तो ये yes, ऑडासिटी, मतलब जस्ट सोचिए कि किसी का कैसा एटीट्यूड होगा या क्या होगा कि वो अपने कचरे के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम साफ करो, तुम मैनेज करो. मैंने तो भाई, मेरे पास पैसा है, मैंने तो टैक्स पेयर हूँ, मैंने तो कचरा कर yes. दिया, अब बोलो क्या करते हो. इट्स it's a very tough mindset that we are dealing with. And जैसे कि आपने बोला कि पहले जब लोग एजुकेटेड नहीं थे ज़्यादा तो कचरा भी बहुत कम होता था, और अब ज़्यादा एजुकेशन है, डिग्रीज हैं, जॉब्स हैं, सब कुछ है, और कचरा भी ज़्यादा है. सो जैसे कि प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है एट एन अलार्मिंग पेस, हम कहाँ कहाँ तक सोल्यूशन ढूंढे, बिकॉज जब तक वो इंडिविजुअल ही रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? Actually, I'm thinking we need more sort of awareness in terms of mass community mobilization, because we have to create a such movement, because लोगों को पता, they are already aware, they are educated enough. Because if I talk about 90s days, when my grandma, they people are never used to be use plastic and polythene that much. But nowadays, even my colleagues, if somebody is ordering food from Zomato thrice in a day, then thrice they are getting plastic and polythene stuff along with their foods. Yeah. So that will be, daily basis waste. And they are educated enough. They know like what are the, bad effect of plastic and polythene. They already aware about that thing. But after knowing that thing, they are still using plastic and polythene. There are still people who are consuming tea in the, polythene plastic glasses. Yeah, yeah. So these are the things you already added the point, like in which individual responsibilities matter a lot. Because individually, if we're gonna think about this and we're gonna step up about this, then definitely we are able to change it. बिल्कुल. सो आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आई कीप रीडिंग अबाउट एंड यू आल्सो शेयर, Yeah. एंड वी have spoken so many times that yes, let's do this together, because there are so many cities you're already working in. How do you, okay, I think there's some signal issue. But my question to Sandy will be, he is based out of Gurgaon, NCR. So how has he managed to um, create such a good team across so many cities in India? Let's wait for him. All right. So while we are waiting for him, thank you everyone for joining. And आप सब बता सकते हैं in chat आप कौन से city से आपने join किया है. Please, I would like to know. We all would like to know कि कौन कौन से cities में आप हमारा live conversation सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं. And then you can share about the problems you are facing in your city. Yes, Sandy. Yeah, Welcome back. there are so many times there is network No, issue and everything, but no problem. definitely we have a strong determination and we will continue with our session. So कि जब हम we'll लोग not give up. Yeah, yeah. एग्जैक्टली जब हम लोग कचरे को ठीक करने की और सॉल्व करने की बात करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी. ये तो एक छोटी Yes, सी yes. परेशानी है, सो वी विल नॉट गिव अप.
Right, Exactly. right. Yeah. So tell me, आपकी presence इतने सारे cities में है. Yes, How sir. did you manage such a wonderful network of people from so many cities? So first of all, just I want to tell you because we are the like group of a youth change maker. Like specifically in our group, people are mostly in the age group of like 13, 14 years to till like 30. 30 is the max age, not more than that. So with the youth, we easily and more effectively implement these kind of stuffs. So because of those things, we are following this hierarchy. So एक हमने रखा भी हुआ है यूथ लेड एनजीओ करके है हमारा. सो Okay, मेजर जो रीजन है बाय फॉलोइंग दीज थिंग्स बिकॉज विद यूथ वी कैन ड्राइव द फ्यूचर बिल्कुल. बिकॉज बड़े लोग एफर्ट्स करते रहेंगे बिकॉज जो मेजर जो पॉपुलेशन है दैट इज यूथ Yeah, एंड विद यूथ वी कैन ड्राइव फॉर द चेंज. yeah. और India has the largest youth population, so future belongs to you all. अगर आप लोग ही lead करेंगे तो ही एक better future guaranteed है, I would say. हम आप लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं. वी आर प्लेइंग दैट सपोर्टिव कैरेक्टर रोल, बट प्रोटैगनिस्ट तो आप लोग सब हो. यू आर द हीरोज इन योर स्टोरीज. सो ऑल द बेस्ट. एक्सीलेंट. या Please या help थैंक यू us. सो मच मैम. Yeah, या please help us with motivating and getting more youth involved from more cities, not just metro cities, बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. और स्पेशली कचरे से रिलेटेड जब हम बात करें तो वहाँ पर एक थोड़ा सा एस्पिरेशन भी है कि वो चाहते हैं कि जैसे वो वीडियोस में देखते हैं ना कि बॉम्बे यस में यस. क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, तो उनको लगता है कि हमारा तो छोटा शहर है और छोटा पूरा एनवायरनमेंट है, तो हम कैसे उनको कॉपी करें. तो वो एक एस्पिरेशनल जो एक इच्छा रहती है, उसके कारण आप सही चीजें और गलत चीजें सब कुछ कॉपी करने लग जाते हो. और अब वो कारण है कि वहां भी कचरों के पहाड़ बनने लग गए हैं. सो उन लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यूथ आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम मे बी टीयर 2 टीयर 3, इवन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? विलेजेस में तो देर आर सो मैनी सस्टेनेबल ऑप्शन अवेलेबल लाइक plastic and polythene use करके they guys have lot of options because early in my childhood when I used to see मेरी ग्रांड माँ थी वो सब्जी लेने भी जाते थे they use their own थैला या. उनके पास अपना बैग होता था हैंडमेड so they used to keep that with him मतलब उनको सिटी में जाना है किसी काम से सामान लेके आना है वो अपने थैले में लेके आते थे they not used to take plastic and polythene but nowadays I'm noticing and seeing villages में भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक एंड पॉलिथीन वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और दिख जाते हैं आप किसी रिमोट विलेजेस में जाएंगे तो आपको नॉर्मली सड़क पे खेतों के बाहर कॉर्नर्स पे आपको प्लास्टिक पॉलिथीन पड़े हुए दिख जाएंगे बिल्कुल. जो स्ट्रे डॉग्स या फिर काउज या कोई भी खाते हैं. उनको छेड़ रहा होगा या. और या फिर खेतों में पड़े होंगे उसका बैड इम्पैक्ट वहां पे फार्मिंग में आ रहा होगा तो वो सारी चीजें अभी से अगर हम बिकॉज अभी उतना उस लेवल पे नहीं आया जिस लेवल पे मेट्रो सिटीज में हो चुका है ये मेट्रो सिटीज में तो पूरे कचरे के पहाड़ बने हुए हैं इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली या. एंड गुड़गांव एज वेल मैनी मैनी अदर सिटीज एज वेल या. सो विलेजेस में इट्स नॉट दैट मच बिग चैलेंज अगर अभी से हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी से हम उसके ऊपर काम करेंगे वी एबल टू मोबिलाइज मोर यूथ इन द विलेजेस एंड द tier 3 and 4 cities देन डेफिनेटली वहां पे वो वाला प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा जो प्रॉब्लम अभी दिल्ली पुणे मुंबई बैंगलोर इन सब सिटीज में है और इन सब चीजों के अलावा क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उस पे हम ये सोचते हैं कि खाली एयर क्वालिटी खराब हुई है ओनली एंड खाली जो मेट्रो सिटीज हैं वहीं के लोग सफर कर रहे हैं बट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज काफी लोगों का लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट हो रहा है या. विलेजेस में इफ आई टॉक अबाउट फार्मर्स बिकॉज ऑफ नॉन सीजनल रेन्स रिसेंटली इन हरियाणा एंड पंजाब so lot of harvest and everything will be destroyed because of the non-seasonal rain things. So fertility issue is also there related to their production and all things. So this is a major thing for the rural population as well. Climate change is a major agenda and
and it's the current challenge, not the future challenge, Yeah. because it's still ongoing. So I request to like youth from rural India or either it's urban India as well. Everybody, let's join our movement and join the hands with us. Like even small effort can be a cause for a big change. बिल्कुल. अगर आप अपनी गली से चार लोग मिलके प्लास्टिक और पॉलिथीन उठा के उसको सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो या रिसाइकिल कर रहे हो, इट मीन्स लॉट। वो आपका एफर्ट्स, आपके ही जैसे कितने लोगों का वो छोटा छोटा एफर्ट एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। जी. सो individually we have to take the responsibility as you already added the point in your first line itself. Yeah, or जो there's a comment from Bindia who says that tier 2 and 3 cities are not aware, and even if they are aware they think it's municipalities work, not their responsibility. ये तो हम हर जगह सुनते हैं कि कॉरपोरेशन वाले करेंगे, नगर निगम वाले करेंगे, उनको सैलरी मिलती है, हम लोग को सैलरी थोड़ा ना मिलती है, हम लोग क्यों करें, ये दूसरों का कचरा हम क्यों उठाएं, ये जो सारा एक मेंटालिटी है, ये एक रोड Yes, ब्लॉक yes. बन जाता है, एक हर्डल बन जाता है ना। और आपने भी फेस किया होगा ये, अगर आप इतने सारे सिटीज में यूथ के साथ भी कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं? मैंने अभी एक प्लास्टिक एंड पॉलिथीन फ्री कैंपस ग्रीन स्कूल एंड ग्रीन कॉलेजेस के अभी अभी डूइंग रिसर्च एंड वी वांट टू स्टार्ट दैट इनिशिएटिव सो दैट एटलीस्ट हम एजुकेशनल थिंग्स में ही वो चीज डाल सकें। सपोज यू आर इन कॉलेज, हम कॉलेज से ही वी कैन स्टार्ट दैट थिंग बिकॉज सो दैट यू विल बी इन कॉर्पोरेट एंड देन यू विल बी इन नॉर्मल लाइफ, so you already know the value, like how thing works, how you have to eliminate plastic and polythene from your life. So I'm thinking to start that initiative for Mumbai, and we already have a session on upcoming like 8th of this July. Yes, So sir. we'll start from a college from Mumbai, like plastic and polythene free campuses. So I will mobilize the youth from that campus. Then they people aware more, like more people in their society and different areas they are living. So first thing, क्योंकि एक एक नारा हम लोग देना चाहते हैं, फेंकेंगे हम तो उठाएगा कौन। सो वो एक चीज होती है, अगर हम फेंकेंगे या हम फैलाएंगे तो उठाएगा कौन। So Good. you have to taken care the responsibility before throwing something plastic and polythene on roads, Yeah. like your ice cream wrappers on road, your ice cream or your eatable stuffs wrapper in the campus. So you have to taken care na. Yeah. बिल्कुल. So उसके लिए we are planning a movement and hopefully we will success in that. Like we are try to plan it in Mumbai and majorly in metro cities specifically. So let's see how will be the response. गुड. अच्छा रिस्पॉन्स होगा, और हम पुणे में भी कोशिश करेंगे ये करने की, तो गुड लक फॉर दैट. बहुत अच्छी बात है. हम हर जगह देखते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, चॉकलेट के रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, ये जो सिंगल यूज एंड थ्रो वाला जो है कल्चर, हमने वो एक फ्रेज ही पॉपुलराइज कर दिया है, यूज एंड थ्रो. हम सोचते हैं कि यूज एंड थ्रो इज ज्यादा सामान कैरी नहीं करना पड़ेगा, हमारे ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा, पैकिंग में ज्यादा लोड नहीं आएगा, तो हम यूज एंड थ्रो ले लेते हैं. लेकिन उसके कारण हमने देखा है कि टूरिस्ट की जो प्लेसेस हैं, जब हम हिमाचल, Yes, yes. उत्तराखंड, इवन एवरेस्ट एक्सपेडिशन पे लोग जो जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो जा रहे हैं, वहां पे इतना कूड़ा फैला रहे हैं कि इट्स एम्बैरेसिंग. जिस जगह को आप बोल रहे हो हेवन ऑन अर्थ, और उसको बना रहे हो हेल ऑन अर्थ बाय throwing your garbage. So it's really embarrassing, and it's हमारे जैसे ही लोग कर रहे हैं जो घूमने जा रहे हैं, या जो कोविड के बाद में दे डिड नॉट गेट अ ब्रेक, सो लाइक हाँ मैं मेंटल पीस के लिए जा रहा हूँ. बट किसके मेंटल पीस के लिए जा रहे हो? आपने Yes. धरती का तो पूरा Yes. मेंटल पीस, फिजिकल पीस सब कुछ छीन लिया. तो उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक, हमें कैसे अप्रोच Yeah, करना yeah. Yeah, yeah. For that, there are many people and activists who already working in some areas of tourist spots. One of them is Pradeep Sangwan, who is also from Haryana, and he tend to be
He is collecting, millions of tons plastic and polythene from Himachal. And recently, Prime Minister Narendra Modi has also talked about him in Man Ki Baat. So he's pretty much inspiration, like youth like that who are taking care of responsibility, catching up your waste that you producing in terms of your picnic. And most of people are already literate जो घूमने जाते हैं tourist spot भी they having expensive cars, they already knows everything. उसके बावजूद भी they are throwing openly. There are so many people that I show and I told them like why you are doing so and these things. So ऐसा educated class ज्यादा कर रही Yes. है if I Yeah. talk about this. तो उसके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो होगा ही होगा, मतलब हमें उनके माइंड में एजुकेशन में ही डालना होगा। बिल्कुल। एजुकेशन के बाद डालना इट्स वेरी हार्ड। Yeah. By keeping this thing in mind, I already told you added this thing कि हम campuses में ही हम शुरू कर दें ऐसी चीज, so that वो practice रहे उनका। Suppose somebody doing a course and for 3-4 years, if they'll practice for the plastic and polythene free things, they will try to eliminate. So that will be a hobby in long Yeah. terms. Yeah. Because बार बार हम एक चीज को देखते हैं, एक चीज को देखते हैं तो हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज के, Yes. क्योंकि Right. हमने Right. बचपन से देखा कि हमें फेंकना सड़क पे ही है। हमने चॉकलेट खानी है तो फेंकना सड़क पे ही, रोड पे ही। तो हम हमें वो बार बार दिखी ना वो चीज, तो वो हमसे वो हैबिट छूटती नहीं, ब्रेक नहीं होती है। सो हम कैंपसेस में वो ब्रेक कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है किसी भी ह्यूमन का। Yeah. तो वहां पे हम 3-4 साल अगर कैंपस के मैनेजमेंट के साथ हमारा टर्म्स अच्छा है, वी कैन टेक इन प्लेज टुगेदर एंड डेफिनेटली campus management will help out us to turn that campus into the green campus and plastic and polythene free initiative. Yeah. You're right. कि हम जितने जल्दी ये आदतें उनमें डालना शुरू करें, जैसे कि कैच देम यंग, स्कूल में ही हम उनको ये सिखाना शुरू करें, तो क्या होता है, बच्चे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं अपने घर में, वो तुरंत टोकने लग जाते हैं और सब लोगों को मॉनिटर करने लग जाते हैं, और जो वो सीखते हैं दे आल्सो वांट टू बी द बॉस। तो वो Yes, एक yes. अच्छी चीज है कि आपका जो एज ग्रुप है 13 से जो शुरू होता है, that's a very good, they are teens, and then teens के साथ उनको responsibilities भी पता चल रही है कि what is it to be a teen like, getting ready for adulthood। तो ये सब जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ड्यूटीज भी आती हैं, सो ये अच्छी बात है। और ग्रीन कैंपस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं। एक और है जेंटलमैन इन चेन्नई हु इज बीन डूइंग ग्रीन कैंपस का, सो हम उनके साथ भी कुछ करने की बात कर रहे हैं, सो वी कैन शेयर दैट एंड वी कैन do that together in various Yes, yes. cities that wherever you are। सो ये तो हो गए कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चे। व्हाट अबाउट पेरेंट्स, जो बहुत अडल्ट्स हैं, जो बहुत मुश्किल हैं, जिनका बिहेवियर चेंज करना आपने Yeah, उनके yeah. साथ? Recently, we also started in survey जिसमें हम schools में जा रहे हैं। हाँ। Basically, बच्चों से we putting like question like that कि have you seen ever your parents carrying vegetables in polythene and all things? So वो बच्चे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पेरेंट्स को, Yes। इफ आई टॉक, बिकॉज रिसेंटली ऑन वर्ल्ड अर्थ डे आई गिवन ए लेक्चर इन ए इंटरनेशनल स्कूल हियर इन गुड़गांव, एंड there is very high standards of education and all things. So काफी लोगों ने बड़े बड़े solutions की बात करी, बड़ी बड़ी policies की बात करी। I just given a simple solution because kids age range was there 13 years to 15-16 years. So I told them there is a very simple thing that you guys can easily do. You guys simply have to adopt a bicycle to commute in the radius of 5 to 10 kilometers. Yeah। And you can even easily come to school as well by bicycles. By doing so, you able to eliminate so much carbon, and definitely your individual efforts will create a big change. And there are so many kids
who given me a pledge like for sure they'll adopt the bicycle. So these are some practical things so that they can easily adopt and influence their parents as well. Same thing we have to do on the waste management thing as well. Kids the only thing they एक बच्चा जिद कर लेता है ना पेरेंट्स के सामने कि नहीं नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए तो किटकैट का ही चाहिए डायरी मिल्क मुझे नहीं खाना. So same thing happened here as well. हम उनको प्लास्टिक एंड पॉलिथीन पे उस लेवल पे हम उनको एजुकेट करेंगे डेफिनेटली. अगर उनको अपने घर में या पेरेंट्स पे प्लास्टिक या पॉलिथीन दिखेगा डेफिनेटली दे विल क्वेश्चन देम. एंड आफ्टर द स्मॉल किड क्वेश्चनिंग ए पेरेंट दे डेफिनेटली विल थिंक अबाउट दैट. Yeah, उतना वो हम लोगों से नहीं सुनेंगे पेरेंट्स. बिल्कुल वेरी होनेस्टली या. बिल्कुल. I agree with you. हम लोग तो वो डेली बेसिस पे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि इधर पे बच्चों को समझाना, यूथ को समझाना इज इट सीम्स लाइक एन ईजियर थिंग बिकॉज वो लोग सुनने समझने के लिए तैयार हैं, बट अडल्ट्स आर सो फिक्स्ड इन देयर हैबिट्स, दे जस्ट डू नॉट वांट एनी चेंज एंड देन दे कीप फिंगर पॉइंटिंग. सो आई लाइक दैट आइडिया. यस, हम बच्चों को ही कर देंगे. एंड उसको सुन के मेरे दिमाग में एक ऐसे कैंपेन बन रहा है. आई विल राइट अबाउट इट एंड देन आई विल शेयर. सो नाउ टेल अस अबाउट सम ऑफ द challenges that you faced. ये आपने शुरू किया और कैसे आपको कुछ मुश्किलें आई होंगी. आप अगर सबके साथ अपने challenges फेस करेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि हाँ, सैंडी को भी चैलेंजेस आते हैं, सिर्फ हमको नहीं आते हैं. सो अगर ही इज ओवरकमिंग एंड ब्रेकिंग थ्रू, देन मुझे भी वही करना है. मुझे एक प्रॉब्लम के बाद में बैठ नहीं जाना है कि ओ माय गॉड ये तो हो नहीं सकता, छोड़ दो इसे. सो दैट इज दैट बिल्डिंग रेजिलियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग in this environment, climate action, waste management. So आप अपना थोड़े struggles भी share करेंगे please? यस यस फॉर श्योर डेफिनेटली बिकॉज अगर आप काम करते हैं कोई भी काम करते हैं डेफिनेटली दो तरीके की बातें होती हैं. लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं उसके बारे में. कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में कि आप कितना भी अच्छा कर लो दे विल टॉक नेगेटिव ओनली. सो आपको जो जैसे ब्लर होता है ना फोटो ऐसे ही आपको ब्लर करके रखना है अपने जब भी आप कुछ भी काम करते हैं. तो आपको नेगेटिव वाली चीजें हमेशा ब्लर रखनी है. सुनना जरूर है आपको बट वो मोटिवेशन के लिए सुनना है. बट करना आपको वही है जो सोसाइटी और आपके लिए अच्छा है. तो वो सारे चैलेंजेस मैंने भी फेस किए. बहुत फेस होता है, क्रिटिसिज्म होता है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें अलग अलग गवर्नमेंट क्रिटिसाइज होंगी, इसका एजेंडा ये है वो है. जबकि हम लोग सिंपली जो सोशल इश्यू है उस सोशल इश्यू को ही माइंड में रख के कुछ भी. सो होता है हर किसी के साथ सोशल. आप दूसरे किसी फील्ड में भी जाते हैं तो आपका क्रिटिसिज्म होता है. तरीके के लोग होते हैं जो आपको एक अप्रिशिएट करते हैं और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो आप कितना भी अच्छा करेंगे दे विल टेक इट नेगेटिव ओनली. That's true. तो आपको काम करते रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ब्लर करके रखना है. आपका सबसे कठिन क्रिटिसिज्म वाला कौन सा वो था जब आपको लगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है? सबसे मुश्किल मेरा इनिशियली सोशल वर्क में जब आया, आई स्टार्टेड विद एनजीओ उदय केयर ट्रस्ट करके. एंड देयर इज ए गर्ल हु वाज को-फाउंडर, मिस आई डोंट वांट टू शेयर द नेम. That's okay. सो काफी हम लोगों ने मेहनत करी एंड मेरे एथिक्स क्लियर थे बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट थिंग. सो हम लोगों ने अराउंड 10,000 ट्रीज लगाने का एक दिन में एक तैयारी भी की थी. वी वर फुली डेडिकेटेड एंड हमने लॉजिस्टिक किया खुद ट्रीज को. आई ड्राइव बाय ट्रैक्टर, मैंने खुद ड्राइव किया. उसके बाद हमने मूव किया ट्रीज को एंड हमने काफी सक्सेस किया. वो सब होने के बाद देन थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब वन साइड मेरा एफर्ट हुआ. उसके बाद जितना भी एफर्ट हुआ मुझे एज सच कहीं से सपोर्ट नहीं मिला उसके बाद. तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत लॉन्ग टर्म हम नहीं कर पाए. तो दैट वाज काइंड ऑफ फेलियर फॉर मी.
कि मैंने इतना कुछ दिया, मतलब अपना जॉब छोड़ा के बाद फिर मैंने फुल टाइम काम किया, और इतना सारा इतनी सारी चीजें मैंने करी, इतने सारे इनिशिएटिव एंड रिस्क मैंने लिए। बट उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुझे एक बार फिर से मतलब स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। तो मतलब सब कुछ होने के बाद अगर तुम्हारे अंदर यू हैव एनफ करेज टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच, देन यू कैन डू एनीथिंग। एंड स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जो हमें ज्यादा सिखाता है। अगर मुझे ऐसे ही मिल जाएगा सब कुछ, या अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे एक फाउंडर बना दिया होता किसी एनजीओ का, तो मुझे चैलेंजेस नहीं पता चलते, बिल्कुल लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करते, मैं रिजेक्शन से नहीं सीखता। तो वो सारे इश्यूज हर एक फील्ड में आते हैं, आइदर इट्स सोशल वर्क, आइदर इट्स एनी एनी फील्ड। या सो दोनों तरीके के लोग होते हैं, इश्यूज आपको आएंगे, बट आपको प्रिपेयर रहना है हमेशा। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी बार क्या होता है, फाइनेंशियली हमें वो चीजें ना पैसे से भी नहीं आ पाती हैं, जितना हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन और डेडिकेशन जो होता है ना, वो चीज वी कांट बाई विद मनी। बिल्कुल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, you can start from scratch and you can achieve anything. ट्रू There are a lot of एग्जैक्टली there is huge scope in this country, I can say. इतने कम उम्र में आपके इतने सुलझे हुए विचार सुनकर मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हो गई हूँ। और आई एम श्योर आप बहुत ही अच्छे लीडर हैं। आपके फाउंडेशन में जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, they must really be very happy working with someone who's so sorted। क्योंकि क्या होता है, जब हम कम उम्र में हमको सक्सेस मिल जाती है तो वो सब कुछ धीरे धीरे चढ़ जाती है सिर पे। तो हमें अचानक लगने लगता है कि अरे मैं तो इंडिस्पेंसिबल हूँ, तुम मुझे बुलाओ, तुम मुझे बुलाओ, तुमने मुझे बुलाया नहीं, अच्छा दैट ऐसा होता है कई बार। Yes, लेकिन yes, थैंकफुली ह्यूमिलिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा कैरेक्टर का ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी आई बिलीव वो ही हमको आगे लेके जा सकती हैं, नॉट yes, एनीथिंग एल्स। वेदर वी हैव नॉट इवन रजिस्टर्ड आवर ओन एनजीओ, लेकिन अगर हमारे पास वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं तो फिर यू नो वी कैन वी कैन जस्ट डू एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच। इट वाज अ वेरी वेल shared thought, Sandy. Now, I know कि थोड़े दिन पहले there was some a contest or some award का thing was happening जिसके लिए you were also sharing कि please vote for me and so I yes, yes, remember yes. that। So आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। How were you nominated? Actually, How did you yeah, become a part? sure, sure. Yeah, actually, award ka I recently got recognized by the Jones Player and Times of India because of my social work, and one of my journalist friend Mm-hmm. from Pune Mirror, and her name is Amrita. Mm-hmm. So she nominated me for that award, and once I get the award, after that she told me that I nominated you for that award. Oh, So that's good. sometimes Congratulations. these kind of stuffs are happening. Thank you so much, man. Yeah, See, that is what ना आजकल तो ऐसा हो रहा है कि लोगों को सेल्फ नॉमिनेट करना पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई और नॉमिनेट करता है और आप जीतते हैं तो सोचिए यू आर ऑन द राइट पाथ। yeah, कंग्रेचुलेशंस। because there are so many journalist fellow and who knows about everything, like what we are doing on ground, and they are articulating same in terms of stories and all things. So they know very closely the struggle that we are doing and the things for we people are fighting. So that's my thank you so much for बहुत your अच्छा, valuable बहुत time. अच्छा। Now I know that you have some projects for education। Yeah. So आप बताइए उसके बारे में कुछ, if you would like to share। Yeah. If I talk about Green Pencil Foundation, basically our foundation is working mainly in four pillars. One of them is climate change that we already highlighted, sustainable mobility and public transport that we people are doing so many projects around that as well. Along with that, we also doing rural child development and slum child education, because there is a huge communication gap between the rural and urban kids
in terms of soft skill development. Because earlier in my school, I was there in village only. So I closely realized that thing. So because of that, I started that initiative. And another thing that I want to tell you, the periods of pride, a project on the menstrual hygiene management. That is our major project that we are doing in 25 plus Indian cities, even in Pune as well, Pune, Mumbai, and many other cities, where we adopted the urban slums to educate teenage girls about the menstrual hygiene management. Along with that, we also doing same thing in government schools as well, because usable with because of the usable sanitary pads, or that is also a reason of waste Yeah, production. So we also try to mobilize the girls to use cloth pads, so that will be a sustainable solution for the teenage girls, also the economically as well, specifically in the rural areas, because वहाँ पे उतना funds या उतनी liberty नहीं होती है women's को yeah, yeah, या टीनेज गर्ल्स को. तो वहां पे दे कैन ऑप्ट दिस क्लोथ पैड वाला सोल्यूशन. कहीं पे उनको फेंकना भी नहीं है, बिकॉज एमसी नहीं होती है रिमोट विलेजेस में. yeah, तो वो कचरा ऐसे ही खेतों में या ऐसी जगह पे होता है. और along with that, mental health that we started during the COVID, yeah, there are a lot of things happened through 3-4 years. हमने देखा कि suicide rate will be continue to increasing, anxiety, stress. There are so many things in specifically in youth as well. yeah. So, by considering that also a major challenge, we started a project happiness on mental health. So, these all four pillars we are touching here through Green Pencil Foundation. That's nice. And when you talk about suicide and mental health, I am a suicide prevention gatekeeper trainer instructor. So इसलिए मुझे यूथ के साथ स्पेशली, और इवन कोविड के बाद तो डोमेस्टिक रेट्स भी बहुत बढ़ गए कि घर में इवन यू नो हस्बैंड वाइफ या सीनियर सिटीजन्स बहुत ही ऐसे डिस्पेयर, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस के सिचुएशंस पैदा हो गए कि दे जस्ट कुड नॉट गेट हेल्प और थिंक कि उनके प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन था. So I very openly talk about that, and if there is anything that we can connect on, I will be very happy to do that. वो मुझे बहुत ही परेशान करता है because it's हम कचरे की तो बात करते हैं, वो हमें दिखाई देता है, Yes, पर yes, जो ये मेंटल हेल्थ है ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता. कोई खुश होने की एक्टिंग कर सकता है, बोल सकता है आई एम फाइन, इट्स ऑल फाइन, और आपको पता चला अगले दिन दैट पर्सन इज नो मोर. सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि लोग ऐसे ऐसे जगह पहुंच गए हैं जब उन्हें दूसरों के ऊपर इतना फेथ नहीं है कि दिस पर्सन कैन हेल्प मी और समवन कैन हेल्प मी. तो हमें उनको यही बताना है कि यस देयर इज हेल्प, every problem has a solution. So you know although we talk about waste here, but दिमाग में भी कोई वेस्ट जमा नहीं करना है, और उसे हमें हमेशा क्या वो जो हम जो कंप्यूटर में करते हैं ना उसको बार बार क्लीन अप करते रहते हैं, वही हमें अपने दिमाग yes, के yes, साथ भी करना है. और वही हमें सड़कों पे और स्ट्रीट्स पे और घरों में भी करना है. सो दैट कचरा हैज टू गो अवे फ्रॉम एवरीवेयर. इट शुड नॉट बी resulting in anyone's life being taken away. So I really feel very deeply for helping anyone with these kind of underlying, because लोग जानते नहीं हैं, because हम यहाँ पे डायग्नोसिस के बारे में बात नहीं करते हैं, हम इंटरवेंशन के बारे में बात नहीं करते हैं. पीपल टेक इट वेरी लाइटली, मजाक उड़ाते हैं किसी को, ऐसे ही कह देते हैं अरे तू पागल है क्या, मतलब ऑल दीज वेरी लूजली यूज्ड वर्ड्स फिर वो मुश्किल पैदा कर देते हैं yes, किसी को. yes. Because I also have a story. Because in COVID 2020, there is a girl who was doing internship with us in Green Pencil Foundation. Her name is Arpita Dasgupta. So before a day, she organized a like virtual session on mental health Mm-hmm. under our this project happiness, and next day she committed suicide. Oh, So sometimes sometimes people unable to share their things to
knowns or friends. So recently we also done in survey in a government school in Mumbai. So in survey we put a question like, if you have any some problems or some issues related to your schools and related to this and that, so will you be comfortable to share with parents, or you try to resource some online help from internet? So major of people opted for the resourcing for the strangers. They are Yeah, not comfortable enough to share with friends or families or like that. exactly. So we have to make a atmosphere fear for our kids कि अभी एक recently case भी हुआ है मुंबई में कि a kid got 34% marks and their family celebrated that. Yeah. So that kind of things and that kind of change we need. We can't बिल्कुल judge anybody with the marks. बिल्कुल। मतलब जब हम बोलते हैं इतने सारे सक्सेसफुल लोग जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, तो there is no formula for success, but if you're happy you will be successful। Yeah, जब हम definitely, because this life is a celebration and you have to celebrate everything. Sometimes failure, sometimes success, sometimes hard time, sometimes easy time. So it's up to you. You have to celebrate everything. This is the मैं तो only mantra. You can be हमारे happy. that's true, हमारे घर में तो हम वी सेलिब्रेट जब कुछ भी नहीं होता है ना, Yes, yes. अचानक ही हम बोलते हैं ओ नथिंग इज हैपनिंग, हमने जो प्लान्स बनाए थे वो कुछ भी नहीं हुआ, लेट्स सेलिब्रेट। यू नो, That's nice. Yeah, बिकॉज what else can you do to make yourself happy? yeah, अगर बारिश हो रही है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपका ये नहीं हो रहा है, आपका कॉल नहीं लग, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल यू डू? एटलीस्ट यू कैन बी हैप्पी। एंड जब हम बोलते हैं लाइफ का पर्पस क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। yeah, yeah. सबको बस वही याद रखना है कि आप इस वक्त जो बोल रहे हो, सर्टिफिकेट कौन पूछता है आपके रिजल्ट क्या आए थे? Nobody asks for Definitely. that. Yes, yes, yes. People just look at you, और जब इंटरव्यू में यही पूछते हैं कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, दे गिव यू द चांस। Yeah, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप जो बोलना चाहे बोलिए। टॉक अबाउट व्हाट यू लव डूइंग, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। yeah, Either that's we can true. do that, Yeah, or we can start with, I am not very good at computers, I am not very good at techno. We can either do that, or we can say, yeah, I sing wonderfully, I play guitar, or I can write stories। आपके हाथ में है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर बाजा बजाते हो कि अपने वीकनेस का रोना रोते हो। इट इज एंटायरली अप टू यू। yes, yes. तो हमें वो So, चेंज लाना चाहिए कि हम कैसे right, right. प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। Yeah, yeah, yeah. और इसके लिए पेरेंट्स को भी ड्रिल करना होगा कि वो जमाना गया कि आप बेल्ट से बच्चे को मार रहे हो या स्केल से बच्चे को मार रहे हो, वो सब अब कुछ नहीं चलता। आप बच्चे के Right. साथ बात करो, बिकॉज बच्चा कहाँ Yes, yes. जाएगा, वो तो सैंडविच हो गया ना स्कूल और Right, पेरेंट्स के बीच में, उसके पास तो कोई नहीं बचा। right, right. दैट्स एग्जैक्टली दे फील कि अब कुछ नहीं हो सकता। सो हमें वो एक माहौल बनाना है जिसमें एवरीबडी फील्स लव्ड एंड नॉट जज्ड। सो व्हाट कि Right, कुछ right, बुरा हो right, गया, सो व्हाट कि कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, टेल व्हाट हैपेंड एंड व्हाई डिड यू चूज दैट ऑप्शन। right, 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 yeah. सब लोग यहाँ कूद के किसकी मिस्टेक थी, मैंने बोला था ना, ऑल ऑफ दैट Right, right, बोलने के लिए सब yeah. तैयार रहते हैं, बट सुनना Right. जरूरी है। वी नीड टू बी गुड लिसनर्स। Yes, yes. So ग्रेट। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, so listeners ढूंढना is really tough in today's era. बोलने वाले हैं सब, even they if they don't have knowledge they'll speak, but सुनने वाला कोई नहीं है, because of that इतने सारे issues बढ़ रहे हैं। आपने you already added relationship से related भी बहुत ज्यादा issues बढ़े हैं because of COVID। सुसाइड रेट भी बढ़ा है, डिवोर्स रेट भी बढ़ा है। देयर आर सो मेनी केसेस कमिंग टू मी एज वेल, दे आस्किंग मी फॉर द लीगल हेल्प। सो दीज थिंग्स, हमें सोशल एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज पे उतना ही फोकस करना होगा जितना हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने में करते हैं, जितना आईएएम में पढ़ाई के लिए एनकरेज करने के लिए करते हैं, आईआईटीज में भेजने के लिए करते हैं।
उतना ही हमें उसमें सोशल एथिक्स एंड वैल्यूज भी डालनी होंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ जीने के लिए। वो पैसा कमा लेगा आईआईटी में जाके, आई एम श्योर, पर उसको जब तक आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं आएगी, पैसे से क्या होगा? बिल्कुल। See, दैट इज ऑल्सो इक्वली it इम्पोर्टेंट। is important, but how I see is that आपको सबसे पहले अपने बच्चे को खुश कैसे रहते हैं वो सिखाना है। राइट। उसे ये पता होना चाहिए कि सिर्फ उसके पास अगर नेटफ्लिक्स का अकाउंट है और इंटरनेट है या फिर कोई इसके उसके शूज हैं या व्हाटएवर जो आपका वो है या ये गेम है, सिर्फ तभी वो खुश नहीं रह सकता। राइट। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो भी वो खुश रह सकते हैं। राइट। तो जब हम लोग एज एन एजुकेटर हम लोग बहुत बार पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चा बोलता है ना मैं बोर हो गया, वो अच्छी या बात है, बच्चों को बोर होना चाहिए। बिकॉज जब राइट। वो उनके पास कुछ करने को नहीं रहता तब उनका वो फिगरिंग आउट वाला ब्रेन चलने यस लगता यस। है। देखो हर राइट। चीज इज लाइक रेडीमेड, यू लुक अराउंड, एवरीथिंग इज रेडीमेड। यस When यस। will they figure out? और हमारे एज में हम सब फिगर आउट करते थे बिकॉज देयर वाज नथिंग रेडीमेड। या तो इसलिए अब जब माइनक्राफ्ट है या लेगो है या ये सारा कुछ है, चेस है, वो सब आपको फिगरिंग आउट स्ट्रेटजीज अपने आप सोचो, ब्रेनस्टॉर्म विद योरसेल्फ, वो सब बहुत यस जरूरी है। यस। एंड राइट। आईआईटी में जाएगा तभी पैसे कमाएगा वो तो है नहीं। एक छोटी सी यस यस यस। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी खोल ली तो भी पैसे कमाएगा, क्योंकि आईआईटी वाला भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में ही आएगा अपना मोबाइल रिपेयर कराने, वो खुद राइट रिपेयर राइट नहीं राइट। करेगा। यस सो यस एवरी यस। प्रोफेशन वेदर इट्स स्मॉल और बिग, एक कुरियर की शॉप भी खोल ली तो भी किसी को पार्सल भेजना है तो वो खुद नहीं भेजेगा, कुरियर शॉप में ही आएगा। सो राइट छोटे, राइट। small things are also very important because they are the links to connect and make the big things happen. यस यस यस। तो हमें बच्चों को, यूथ को, पेरेंट्स को ये समझाना है, if someone can be a good driver or a good mechanic, वो भी बहुत जरूरी है कि कोई अपनी खुद की बाइक और कार खुद नहीं ठीक करते हैं, राइट हमेशा राइट मैकेनिक राइट। के पास ले जाते हैं। तो यू कैन बी अ गुड मैकेनिक, यस जो भी करो वो बहुत अच्छे से करो। सो दूर दराज राइट से लोग आते हैं कि अरे वो तो बहुत बढ़िया मैकेनिक है या वो बहुत बढ़िया जो भी हम बोले क्या करते हैं। राइट सो वॉट एवर यू डू, इट कैन बी स्मॉल और बिग, बट डू टू द बेस्ट ऑफ राइट योर राइट। abilities. यस And ऑफ that's what, कोर्स। if you want to clean up something and you want to be into waste management or waste reduction, you do such a good job कि लोग अपने आप आए कि अरे आई एम वेरी ashamed कि मैंने वहां पे कचरा डाला, इन लोग ने कितने राइट बढ़िया तरीके से ये साफ किया राइट है। राइट। That's how we have to, I think that जब तक वो inner transformation नहीं आता है तब तक यस यस। कोई करेगा नहीं my waste my responsibility, सक्सेसफुल नहीं हो या सकता। या या। And राइट। you are doing a good job of all of it, मतलब whether it's education या sustainability, menstruation, सब जगह आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। What are your plans? What are your future plans? आप और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? In future, actually, I just want to drive these all initiative in the every remote villages in the Haryana, Punjab, majorly in northern India. So hopefully, there are so many CSR partners in our touch. So hopefully, we able to get some support from some CSR partners with their help. We definitely able to reach and touch the base community that is living in the villages, doing farming and doing many other professions as well. So we also benefit, we also ensure that so that villages people also get the benefit Yes. of these initiatives and policies, because periods is not an issue of cities only. हाँ, उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सैनिटरी यूजेबल सैनिटरी पैड सिटीज में भी यूज होते हैं, इवन विलेजेस में पैड्स यूज ही नहीं करती हैं, खराब कपड़ा यूज करती हैं टीनेज गर्ल्स। कहीं कहीं रेयरली कोई ज्यादा एजुकेट लिटरेट होता है, 100 में से 4 घर ऐसे होंगे जो पैड यूज करते होंगे सैनिटरी, वो भी यूजेबल होता है, उससे भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो वो हमको मोबिलाइज करना है, वो हमको उस कम्युनिटी को मोबिलाइज करके जो आजकल
प्रूव्ड क्लॉथ पैड्स आते हैं, उनको वो लॉन्ग टर्म्स में यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, इकोनॉमिकली इफेक्टिव है। तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी एक अच्छा स्टेप होगा, एक अच्छा हम सोशल चेंज लेके आ सकते हैं। और इकोनॉमिकली तो डेफिनेटली उनको बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा। दे कैन कीप 10-20 पेयर्स फॉर 2-3 years, सो दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, एंड उसके बाद भी दैट विल बी रिसाइकलेबल, रिसाइकिल हो सकता है वो। तो वो सारी चीजें वी आर ट्राइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। और उसके अलावा वी ऑल्सो प्लानिंग फॉर मैनी रिफोरेस्ट्रेशंस। One of them is Aravali reforestation project. Hopefully make the Aravali green. So hoping for the best. Good. And when you talk about sustainable menstruation, using the cups is another sustainable option, क्योंकि आप Yeah, एक कप जो लोगे वो 10 साल तक चल सकता है, और वो जो right, सिलिकॉन जिस मटेरियल से बनता है वो भी बहुत सेफ रहता है, और आप उसको क्लीन करके बार बार यूज कर सकते हो। सो आपने 10 साल में 2,000 रुपए ऐसे इन्वेस्ट किए, तो वो आपको बहुत जिसके पास ऑफ कोर्स बाथरूम होना चाहिए, वो सब कुछ चीजें हैं जो होना चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर मेनी पीपल हु कैन बी ट्रेन्ड एंड taught how to use that. So great. right. Because education is also something, because government there is also providing the usable sanitary pads in government schools. But we recently done in survey in Gurgaon, that is a metro city. So we get a big insights. There are so many girls who are not aware about like proper use, and there are many girls who are directly throwing it at after use. So there are so many insights that is really dangerous for us. बिल्कुल So बिल्कुल. that is the situation of the metro city. Then what we can say about the villages and remote locations. That's So giving pad is not a solution. So firstly, you have to properly educate them about the menstrual yeah. hygiene management, about the waste produced from that, like sanitary pads. So we have to properly educate them. We have to put up those things in educations. So Yes. this is the Right. things that we have to touch. Yeah, It has to be a part, it included from fifth grade onwards, so that people understand कि ये जब शुरू होगा तब मैं वो कचरा बनाना शुरू हम करेंगे, and how should we take care of it, or how should we choose to be sustainable, or why, what is the need to be sustainable. मतलब सबसे पहले तो लोगों को यही right, right, समझना कि सस्टेनेबल होने का जरूरत क्या जरूरी है. इट्स जस्ट अ right, बिग वर्ड, है ना. उनको लगता है कि right, अरे ये इतना बड़ा वर्ड है, हर कोई यूज करता है, बट व्हाट इज द रेलेवेंस. तो हमें वो रेलेवेंस समझाना है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एबीसी. right, रिमेम्बर right. हमारे नानी के जमाने में, वी ऑलवेज गो टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में, एंड वी ऑलवेज गिव Yeah, एग्जांपल्स फ्रॉम देयर, बिकॉज वही जमाना सस्टेनेबल था. right, right. Yeah, तो हमको वही एग्जांपल्स देने पड़ते हैं हमेशा. सो really nice talking to you, Sandy, and all the best for all the endeavors, all the projects and all the campaigns. And I am looking forward कि हम लोग भी कुछ campaigns में साथ में काम करें. It will be great learning from you. बहुत सारा हम मुझे भी सीखने मिलेगा, because मैं इतने सारे cities में आपके साथ में काम करूँगी, and I am looking forward to that. If you want to give any words of wisdom for all the people who have joined and patiently listening, please go ahead. बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं. yeah, yeah. So I just want to tell you everyone, waste that we produce, that is our responsibility only. As ma'am already started an initiative, my waste, my responsibility. So let's together we can strong this movement more. Like we can mobilize, mass community throughout the India. So let's connect with the initiative, and let's manage our waste that we produced by ourselves. So हमारा कचरा हमको ही उठाना है, फेंकेंगे हम तो उठाएगा कौन, ये नारा है, ये जो स्लोगन है. We have to give this in every state and every villages in different regional languages. चाहे वो मराठी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पंजाबी है. बिल्कुल. फेंकेंगे हम तो उठाएगा कौन, ये सवाल लिखा होना चाहिए हर एक गांव की दीवार पे. फेंकेंगे हम तो
उठाएगा कौन, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा होना चाहिए, बिल्कुल। हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, ताकि हर एक 5वीं क्लास भी व्यक्ति भी समझ सके कि फेंकेंगे हम तो उठाएगा कौन, उसका जवाब उसके पास सोचने के होना लिए छोड़ चाहिए। दीजिए। वो अपने आप सोचेगा, आप मत बताइए यस। कि उठाएगा कौन। बस आप एक सवाल लिख दीजिए उनके जहन में, उनके दिमाग में, कि फेंकेंगे हम तो उठाएगा कौन। वो उसका जवाब अपने आप तय करेंगे, क्योंकि उतना सोचने का उनका भी एक हक है, बीइंग इन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और जब हम ये सवाल रखेंगे, डेफिनेटली वो सोचेंगे। बिल्कुल। और मुझे इस बात पे ये लगता है कि हम यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब सब लोगों से, हर कोई आजकल वो कर रहा है, लेकिन अब हमें मैनेजमेंट से थोड़ा सा हटकर रिडक्शन की बात करना चाहिए, क्योंकि राइट, जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द राइट, फर्स्ट राइट। रूल कि हमें रिडक्शन करना ही है। सो आज जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, उन सब लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोचिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी नीड्स हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके वांट्स हैं। अगर हम ऐसी लाइफ जीना शुरू करें जो नीड्स को फुलफिल करती है, दैट्स इट, और वांट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहती, क्योंकि हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो उसी सिचुएशन में हम वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग चैलेंज जो हम लोग सालों साल, जनरेशन टू जनरेशन हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस सवाल को और इस जर्नी को। बट वेस्ट रिडक्शन should start now, and with all of us, especially who joined this session. Please think about it, and you're most welcome to share your ideas, thoughts on My Waste My Responsibility Instagram, या फिर हमारे पास फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स भी हैं, वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ये शेयर करने के लिए कि आप अपने वेस्ट रिडक्शन जर्नी को कैसे शुरू करना चाहते हैं। I hope कि Sandy joins again because abruptly वो कट हो गया. So I'll be here for a few more minutes. And if you want to share something कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, आपने क्या सीखा, what are the takeaways, please do share. यहाँ पर आप बताइए. We'll be happy to hear from you. Yes, you can only type. So thank you everyone for joining. I think due to the internet issues, maybe Sandy is not able to join again. But thank you everyone. It was good to have you all as patient uh, listeners and participants. And we enjoy inviting new guests every week and talking to them for you, because ये आपके लिए कर रहे हैं, so that
आप लोग अपने जर्नी को और मजबूत बनाएं, आप दूसरे लोगों से सीख सकें कि कौन से आइडियाज़ आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके लाइफ में, आपके सोसाइटी में, आपके ऑफिसेज में, और उसको स्केल अप कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. So thank you very much. It was lovely talking to you all, and our guest was um, wonderful youth icon Sandy, जो हमेशा अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करेंगे. So thank you so much once again. Bye, take care and stay safe. See you next week. Bye bye.